Banana mask. Ingredients: 1 ripe banana, 1 tablespoon honey, 1 tablespoon lemon juice. Instructions. 1. Mash the ripe banana in a bowl until it forms a smooth paste. 2. Add the honey and lemon juice to the mashed banana and mix well. 3. Ensure that your face is clean and makeup-free before applying the mask. 4. Using clean fingers or a brush, apply the mask to your face, avoiding the eye area. 5. Leave the mask on for about 15-20 minutes to allow the ingredients to work their magic. 6. Rinse your face thoroughly with lukewarm water and pat it dry with a clean towel. 7. Follow up with your regular moisturizer to lock in the hydration. The banana in this mask contains natural enzymes and vitamins that can help nourish and brighten the skin. Honey has antibacterial properties and can provide a gentle exfoliation. Lemon juice contains vitamin C, which can help even out skin tone and promote a radiant complexion. However, be cautious with lemon juice if you have sensitive skin, as it can cause irritation for some individuals. It's always a good idea to do a patch test before applying any new ingredients to your face. केले का मास्क. अज्जा. 1 पका हुआ केला. 1 खाने का चम्मच शहद. 1 खाने का चम्मच नींबू का रस. हिदायत. 1 पके हुए केले को एक प्याले में इस वक्त तक मैश करें जब तक कि यह हमवार पेस्ट न बन जाए. 2 मैश किए हुए केले में शहद और नींबू का रस शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें. 3. मास्क लगाने से पहले यकीनी बनाएं कि आपका चेहरा साफ और मेकअप से पाक है. 4. साफ उंगलियों और बुर्श का इस्तेमाल करते हुए, आंखों के हिस्से से गुरेज करते हुए, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं. 5. मास्क को तकरीबन 15-20 मिनट तक लगा रहने दें ताकि अज्जा अपना जादू काम कर सकें. 6. अपने चेहरे को हल्के गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें और साफ तौलिया से खुश्क करें. 7. हाइड्रेशन को बंद करने के लिए अपने बाकायदा मॉइस्चराइजर के साथ फॉलो अप करें. इस मास्क में केले में कुदरती एंजाइम्स और विटामिन होते हैं जो जिल्द की परवरिश और चमक में मदद करते हैं. शहद में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात हैं और ये एक नरम इखराज फराहम कर सकता है. लीमू के रस में विटामिन सी होता है जो जिल्द की रंगत को बेहतर बनाने और चमकदार रंगत को फरोग देने में मदद करता है. ताहम, अगर आपकी जल्द हसास है तो लीमू के रस से मोहतात रहें क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए जलन का सबब बन सकता है. अपने चेहरे पर कोई भी नया अज्जा लगाने से पहले पेच टेस्ट करना हमेशा अच्छा ख्याल है.